अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे आपको पता है खैर-कुन ऑर्गेनाइज़ेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है और हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सेशंस करवाते रहते हैं। तो जो आज का हमारा सेशन है वो यूग्रैड प्रोग्राम के ऊपर है, जो कि पाकिस्तान जो यूएस मिशन टू पाकिस्तान है और यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान, वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी भी पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो आज का जो हमारा जो सेशन है वो एंटायरली है कि यूग्रेड 2022 जो है उसका कोहोर्ट या उसकी एप्लीकेशन जो है उसको किस तरह अटेम्प्ट किया जा सकता है और किस तरह आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बन सकते हैं। इस सेशन के लिए जो हमारी जो मॉडरेटर है वो ज़ारा अशरफ है, जो स्पीकर है वो हमज़ा मुज़फ़्फ़र है। तो अभी मैं ज़ारा अशरफ से कहूँगा कि वो प्रॉपर्ली सेशन का आगाज़ करें और स्पीकर को इंट्रोड्यूस करवाएँ और उसके साथ-साथ जितने भी आपके क्वेश्चन्स आंसर होंगे, वो ज़ारा हैंडल कर रही होंगी एट द एंड ऑफ दिस सेशन और ड्यूरिंग दिस सेशन बिकॉज़ दिस सेशन इज़ गोना बी एंटायरली कन्वर्सेशन बेस्ड। तो ज़ारा क्वेश्चन पूछ रही होंगी और जो हमज़ा है वो आंसर दे रहे होंगे। तो आप सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जो भी अंडरग्रेड स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप जो है ना जितने भी आपके क्वेश्चन्स आंसर हों, प्रॉपर जो वाक़ई वैलिड क्वेश्चन आंसर हों, तो वो आप क्वेश्चन आंसर की टैब में या चैट में लिखते रहें और ज़ारा जो है वो उनको पूछती रहेगी हमज़ा से। वन्स अगेन थैंक यू सो मच ज़ारा और हमज़ा, आप दोनों का आपने बहुत आज मसरूफ़ अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ऑडियंस आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने भी टाइम निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपके लिए बहुत मुफ़ीद हो और आप इसको विन कर सकें। जी ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहरा अशरफ है और मैं डीवीएम स्टूडेंट हूँ एट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद और मैं खैर-कुन के अंदर एज ए चीफ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। आज का जैसा कि आज़म भाई आपको बता चुके हैं, जो हमारा सेशन है इट्स ऑल अबाउट यूग्रेड प्रोग्राम 2022 और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हमज़ा मुज़फ़्फ़र हैं। ही इज़ अ ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर और करंटली वो खादी इंटरनेशनल के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ वो ऑनलाइन बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। हमज़ा मुज़फ़्फ़र यूईटी के स्टूडेंट थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, जब वो यूग्रेड प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए थे इन द फॉल 2017 और उन्होंने अपना एक सेमेस्टर जो था वो फिर मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा था अंडर यूग्रेड प्रोग्राम। और मिशिगन में इनके स्टे के दौरान इन्होंने बहुत सारा वॉलंटियर काम भी किया। ही वाज द मेंबर एट MSU IRU एंड MSU रिक्रिएशनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एंड फूड टीम लीड एट वॉलंटियर्स ऑफ अमेरिका। तो अब सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे काइंडली आप Q&A टैब के अंदर लिख दीजिएगा एंड वन बाय वन हम उनके आंसर करते रहेंगे। ओवर टू यू सर, थैंक यू। All right. Hi everyone. My name is Hamza Muzaffar, and I have the pleasure to speak with you all today about the Global UGRAD program. But before we start this session, I just want to ensure that all of you guys can hear me. So can you quickly write yes in the chat section if you can hear me? Yes. Okay. All right. People can hear me. Perfect. Okay. So I want this session to be very interactive. I don't want to comment on those things जो कि आप already global UGRAD USCFP की site पे जाके देख सकते हैं. I want this session to be a source of motivation for you guys कि आप लोग इसमें अच्छे से अच्छी research करें और इसको time spend करें इस activity के ऊपर while you're filling out your applications as well. So let me start by telling you guys this, that I'm a graduate mechanical engineer, but currently I work in a very different business environment, and my academic degree has nothing to do with what I'm doing today, which is managing the e-commerce side of the business, working towards formulating digital strategies and customer services and everything as such. So if I have to draw one liner solution to how am I doing today, what I'm doing today, is because of this program, Global UGRAD program. So जब लोग select होते हैं इस program के लिए, everybody has a very different approach towards this program. कुछ लोग enjoy करने के लिए जाते हैं, कुछ लोग एक different academic experience लेने के लिए जाते हैं, कुछ लोग इस program पे इसी जाते हैं कि वो ये figure out कर पाएं कि what they really want to do with their lives. Luckily for me, when I went on this program, I didn't know what I want to do. मुझे नहीं पता था कि मैं इस program पे किसी academic experience के लिए जा रहा हूँ या सिर्फ enjoy करने के लिए जा रहा हूँ या सिर्फ घूमने फिरने जा रहा हूँ. But fortunately for me, I got to know about a lot of things that I didn't know before, and the very important thing was I realized that what I want to do with my life, what I want to do moving forward when I get out of the university program. So
for you guys, all of you guys, जो कि इस साल apply कर रहे हैं, I think the ultimate motivation behind applying to this program, spending time in applying to this program should be here. This is a great chance for you, number one, to go abroad, to study abroad in one of the finest, in many of the finest universities in the US. And then, thanks to those programs and thanks to those amazing people जो कि आपको पाकिस्तान में शायद इतनी opportunities नहीं मिलती हैं, जहाँ पे आपके academic advisors होते हैं, आपके counselors होते हैं, लेकिन वहाँ पे people, based on your potential, based on your attributes, based on your qualities, they let you know, they tell you that, for example, what future program is best for you, how you are going to excel in different career programs when you get out of the university. So मैं आज़म से और मैं जब ज़हरा से चीज़ डिस्कस कर रहा था तो they sent across some list of questions के जिस पे हमें बात करनी चाहिए, but I personally think कि all of those questions जो कि for instance I'll quote some questions, for example कि प्रोग्राम कितने महीने का है, हम किस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, हमें कुछ पे करना है या नहीं पे करना, हम कहाँ पे रहेंगे, हम कैसे जाएंगे, हम कैसे आएंगे, ये वो क्वेश्चंस हैं कि if any one of you is really interested in applying to this program, you already have answers to all these questions. My job, I personally feel this, that my job, as a panelist in this session is, to motivate you guys to spend more and more time in writing your SOPs, in crafting your SOPs in the best way possible, and to highlight the important aspects of SOP that what you should mention in SOP. So कुछ questions, however, are very very common और जो कि हमेशा लोग पूछना चाह रहे होते हैं या पूछते हैं. And I'll start with one question: how much my GPA matters in my selection. For example, many of you don't come with very glittering GPAs like me as well. I didn't have a very good GPA, but I'll tell you this, that global UGRAD program is not about your academic results. It's about how well you are involved in the community, in your surroundings, and how much you care for your surroundings. For example, if I'm a person जो कि basically अपनी class के अंदर, अपनी academics के अंदर इतना strong नहीं है, लेकिन at the same time I'm volunteering at 3 different organizations, और मैं basically local community भी run कर रहा हूँ, मैं different charities भी organize करता हूँ, मैं different fundraiser भी organize करता हूँ. These are the kind of events which shows my commitment towards my people. कि मैं अपने लोगों का ख्याल रखता हूँ, मैं अपने लोगों के बारे में सोचता हूँ. And all these events that I have mentioned, they're like one form of contributing towards society. You can contribute towards society in hundreds of different ways, in thousands of different ways. So yes, the bottom line is that GPA doesn't matter. What matters is your overall personality and what you want to achieve out of your life. Very often I get to hear this question कि यार मेरे पास GPA भी अच्छा नहीं है, या मेरा GPA बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैं जो है ना UGRAD के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. So if you have an aim to change, for example, this very habit कि आप पढ़ाई से निकल के you want to explore the outside world as well, you want to see what is outside the conventional class boundaries, you can mention this in your SOP, and this would be your strong point कि आप चाहते हो कि basically you want to change the way you have been treating your life so far, and you want to go out of the conventional classroom, and you want to experience those experiences, and you want to help people outside the community, and once you have gained enough experience from this program, you want to come back to your community and you want to help your people as well. So it's all about the approach that you take in your SOP. No two SOPs can be the same. अगर आज आज़म और हमजा दोनों एक SOP लिखेंगे, हमजा अपने लिए लिखेंगे और आज़म अपने लिए लिखेंगे, अगर हमजा और आज़म की personality 110% same है ना, even then Hamza's SOP will be 110% different than Azam's SOP. So when you are writing down this SOP, please do not copy others. अगर मुझे इस सेशन के बाद आप में से किसी पार्टिसिपेंट का मैसेज आता है कि can you please share your SOP, I'm telling you right now, by the way, I don't have my SOP because it's been 3-4 years now, but even if I had my SOP, I would not share my SOP with you. There is a reason why personal statement is called personal statement, because it's you're trying to reflect your personality onto a piece of paper. So if you, before writing your SOP, will read multiple SOPs of multiple people, आपको अपने बारे में लिखने के बजाय आप लोगों के बारे में अपनी SOP में लिखोगे. आप सोचिए फॉर एग्जांपल कि आज़म ने अगर ये लिखी, आज़म के प्रोग्राम में सिलेक्शन हुई थी, तो शायद मैं भी ये कॉपी करूंगा तो मेरी प्रोग्राम में सिलेक्शन हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता. प्लीज डोंट डू दैट. Do not ask anyone for their personal statement. Do not ask anyone. So I'm sure all of you guys have made your accounts in the USCFE portal. तो अगर आपने कभी जाके देखा हो SOP बॉक्स, यहाँ पे अपने SOP लिखनी है, पेस्ट करनी है, तो उसके ऊपर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं.
What I always advise people is that when you start writing your SOP, forget about the word limit, forget about anything. वो जो 4 questions वहाँ पे लिखे हुए ना, उन 4 questions के आपने आंसर करने, और वो आंसर जितना भी लॉन्ग हो, जितना मर्जी लॉन्ग हो. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक उसमें 4 questions में the first point is your interest and personality. That is the first point. Number 2 is your academic objectives. Number 3 is your goals related to your field of study and personal development. Number 4 is the reason why you wish to pursue them in the USA and how it relates to your interest and future objectives. So in 4 points के against, in individual points के against, आप अपना आंसर लिखें. For example, what is your interest and personality? ठीक है, आप इसका आंसर लिखें, वो 100 words का हो, 200 words का हो. Then आप next question पे आए, your academic objectives, आप इस question को answer करें. When you have answered all these 4 questions ना, then combine them together. और जब आप उसको combine कर लें, तो I'm sure this will be an SOP of say 600 to 700 words. But your limit is just 200 to 250 words. आप उससे exceed नहीं कर सकते. Then you start reading your SOP. Or every time you will read your SOP, every time you will revisit it, आपको उसमें कुछ information ऐसी मिलेगी जो आपको लगेगा यार अगर मैं इसको अपनी इस SOP में ना भी डालूं ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सही है. हर SOP के अंदर ये मेंशन कर देना कि मैंने डिबेट कंपटीशन जीता है या मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन से काम किया है, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. जब कोई भी आप इसको ऐसे देखो कि जब consider yourself as an examiner, consider yourself as someone who is reviewing this SOP, और उसको देखो, उसको ऐसी इस पर्सपेक्टिव से देखें कि यार आपकी SOP के अंदर कोई मीनिंग है, does it actually convey something, या अगर आप अपनी सिर्फ उसके अंदर सक्सेस को हाईलाइट करोगे ना, that is not enough. अगर आप उसके अंदर सिर्फ ये कहोगे ना जी कि मुझे GPA नहीं है, मैंने ये नहीं किया, that is not enough. अगर आप उसके अंदर अपनी वीकनेस को या अपनी स्ट्रेंथ को इस चीज से रिलेट करोगे, how you want to relate this strength or this weakness to something which is more meaningful, to something which which ultimately is contributing more towards the society, that is a win-win situation. And that is an SOP जहाँ पे basically there is no chance that you will get rejected. जहाँ पे ना your strengths and your weaknesses are ultimately related to the society you live in or the society you are a part of. So again, आप उन 4 questions को, उन 4 points को answer करें, and then combine them together, and then start revisiting it every day, once or twice every day, or every time you will read it, every time you will find some information that won't be necessary to the SOP, so you can remove it. And bottom line is, when you have done this activity for 20-30 times, when I say 20-30 times, I mean 20-30 times, because again I will say, if you're not if you don't have enough commitment कि आप दिन में 2 बार अपनी SOP का review कर रहे हैं, then you don't have enough interest to apply for this program, and then you don't want to get selected for this program. So it's all about how much excited, how much commitment you have towards this program to be selected for this program. So read your SOP over and over again, and the final version of it will be the best and excellent version of it. My experience, if I talk about my experience in US, I went in August 2017. I was there for fall semester. I went to Michigan State University. That's where I met Azam as well, and it's one of the best universities in US. It was a phenomenal experience, not just in terms of academics, but it was phenomenal that अगर आप वैसे भी कभी कहीं travel करें, ना चाहते हुए भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. You get to have a lot of cultural interactions. You get to have a lot of different perspective on different things. क्योंकि when you're living with a local American, because when you are selected for this program, when you go to US, you live with a local. So when you live with a local and you get to experience their country or their state from their perspective, it's a whole different experience. So I loved it. I traveled to a lot of different states. I was one of those people अपनी बैच में I think सबसे ज़्यादा states घूमी थी, because I love traveling. And the reason where I'm today is one of the very contributing factors towards this career was this program, which was an eye opener for me, which made me realize what I want to do with my life, what I really want to see going forward 5 years down the road. So this program can help you in so many ways. And honestly, if for example, if your intention with this program is you want to enjoy, that is not, I'm not saying it's wrong. You have a lot of options to enjoy. You have a lot of options to explore as well. But if you're getting this scholarship, if out of thousands of people, you get this opportunity to go on a fully funded semester abroad, why not to make the most of it? So enjoy as well, but try to make good connections,
expand your network, and this will ultimately expand the horizon of your professional career as well in the long run. So I think let's move more towards the question side. I don't want to keep talking, and I want to hear more of your queries. But please, again, do not ask questions जिनका आंसर आपकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है. It ultimately reflects, you're asking those questions जो कि I think आपको शायद उनकी वेबसाइट पे जाके वहां पे आप बहुत आराम से और बहुत इजीली आप जाके उनका आंसर ढूंढ सकते थे. वो क्वेश्चंस पूछें जिन क्वेश्चंस का I think आपको वेबसाइट पे आंसर नहीं मिलेगा, या those questions for which you have to consult someone. So I'm very open to questions now. Please, if you have any questions, let me know. Thank you so much. सब लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं काइंडली आप लोग उसको टाइप कर दें, और इतने टाइम में सर मेरा क्वेश्चंस था जी प्लीज पर्सनल स्टेटमेंट के रिलेटेड ही कि लाइक एक स्टूडेंट है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मतलब अच्छा है एंड सोशल वर्क भी है, तो उसको स्टार्ट पे अगर वो अपनी लाइन पे शो करना चाह रहा है अपना मतलब एटीट्यूड और अपना बिहेवियर, अपनी पर्सनैलिटी, तो उसको किस साइड से शो करना चाहिए, लाइक सोशल और मतलब एजुकेशनल? I strongly believe that the starting of your starting line or the starting era of your personal statement should be your personality, who you are as a person, who do you think you are as a person. So I still believe my first line of statement was something like let me think about it. What was it? So it wasn't exactly the same line, but it was something along these lines: helping people and living my life with my feet in their shoes, defines me. Now, this one statement is a complete chapter. It depicts my personality. I'm a very helping person. I see the world from the perspective of different needy people who need help in one way or the other. And it conveys the kind of person I am, the kind of personality I have. और honestly, एक चीज में आप लोगों को चीज बताऊं कि झूठ नहीं लिखना चाहिए अपनी SOP के अंदर just because of the fact कि आप select होना चाहते हैं. Don't lie in your SOPs. Whoever you are, embrace yourself first, and then start writing about yourself. Or every next sentence should make me more eager to know more about you. This is how you should craft and you should write your SOPs. Does that answer your question? Yes, thank you. And एक और क्वेश्चन था कि जो हम वॉलंटियर एक्टिविटीज हम टाइप करते हैं, लाइक उसमें हमें स्टार्टिंग डेट भी लिखनी है एंड एंडिंग डेट भी, लेकिन अगर हमें कंटिन्यू है, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो हम एंडिंग डेट में क्या लिख सकते हैं? So Isra, many a times when you are applying for a job position as well, this happens कि वो जो current position होता है उसमें ending date पूछ रहे होते हैं. I'm not sure about this answer, but what you can do is you can type a date from the future. Say for example, अगर आप अभी currently किसी organization का part हैं और आप उसके साथ भी काम कर रहे हैं, तो you can type a date for say 2022 in the future if there's an option. कभी कभार future की option का available नहीं होता, मतलब future की date का option, तो आप उसमें जो उसी दिन for example जिस दिन आप application submit कर रहे हैं या fill कर रहे हैं, आप उस दिन की latest जो data वो डाल दें. जी, okay, thank you. All right. Let's move to the question that we have. So we have a question. Laiba Rizwan, जो semester हम USA में पढ़ेंगे, for example 5th semester में अगर हम USA जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान वापस आकर हम 5th semester दोबारा पढ़ेंगे University of Sargodha में? Look, my answer is every university in Pakistan has a different क्या बोलते हैं उसको, जो उनकी guideline होती है towards transferring your credit hours. So कुछ यूनिवर्सिटीज में if you take those subjects जो कि आपके बेसिकली आपने यहाँ पे पढ़ने थे, अगर उनका करिकुलम मैच कर रहा है और आपने वहाँ पे जाके सेम सेमेस्टर पढ़ा, आप अपने क्रेडिट्स को ट्रांसफर करवा सकते हैं. लेकिन if you are specifically asking for University of Sargodha, I don't know, because I have not been to University of Sargodha and I cannot tell you for example what their rules are. So my answer would be to go to your administration, ask them अगर मैं similar courses वहाँ पे जाके पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ, तो मुझे क्या उसको मैं क्रेडिट ट्रांसफर करवा सकता हूँ, वो आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं इसके बारे में. Does a veterinary student applicable for UGRAD? I know for sure that medical students can apply. I'm sure if they can apply, you can apply as well. But I think they need to be in their 2nd, 3rd, 4th year of their academics. Next question is, क्या 8th semester की internship
हो सकती है UGRAD के through internship. No, this is not an internship program. This is a cultural and more of an academic exchange program. So I'm not sure what question are you asking. I'm sorry. Khadija Khalid, I'm in second semester. So is it the right time to apply for UGRAD or should I apply in third semester because I would be more mature? Maturity has nothing to do with your semesters, just saying out loud. But I think you need to be in your second or third year if you are in the 4-year degree program. So you need to be in your second or third year of the university degree. How would we get these 4 questions? It means that you have not, yet made an account for your application. So make the account, you will see. Kamran Shakur, Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Assam Asif, what is honestly, these are the questions, what basis the student gets selected for UGRAD? I've already answered that. How COVID affect this program? I do not know. We'll have to check the website. Is it okay to start SOP with quote? I don't think so. Do not mention anything from Google. Do not mention quotes. No, just, you already, have limited amount of words to explain and, define yourself. Do not waste those words in quotes. This is not right. If we have attended fellowship program like Amal Fellowship, and I don't know what this fellowship is, can we write in non-academic? Absolutely, you can write all your experiences, all the fellowships that you have a part of. And as I said before, try to link them up with, your experiences and your strengths and your weaknesses. If someone is receiving scholarship here, will it be affected? I mean, will he continue to receive that scholarship even after I am not sure which scholarship are you talking about. You have to talk about this stuff from the same administration जो आपको scholarship offer कर रही है, आपको उससे पूछना पड़ेगा. I'm a student of LLB, 5 years in Punjab University Law College. We don't have semester system here. We follow annual system. Can I still apply for UK 2022 and get selected? So my understanding of this is because medical is also a 5 years program, and for them they have this SOP that they can apply in second, third, or fourth year if they are if there is a medical student who is in second, third, or fourth year, they can apply. So I'm assuming that if you are in a 5 years program, and since medical college also have annual system, so you can also apply if you are in second, third, or fourth year program. But please reach out to USCFP. They can tell you better. Is there necessary required collaboration between home and host university? What? No, there is nothing as such. No. How much is the total amount we need after selection? As for people who cannot afford, you don't need to have a single penny in your pocket, because everything is taken care of. You don't need to do anything, literally anything. Will we give our 1 year to this UGRAD program academically? How much it will be beneficial for us as a non-degree program? Very beneficial. I started this session by telling you guys that the reason where I am today is not entirely because of this program, but is a big portion of where I am today is because of this program. I got to know what I wanted to do in the future. There were people who told me, for example, which career paths were best for me, and they helped me in so many ways. So this is a great program for you. Can HEC scholarship award student apply? I don't know. You please ask HEC. Dr. Muhammad Rashid, sir, क्या post graduate मतलब MPhil PhD students के लिए भी UGRAD नहीं? You can apply for Fulbright program. There's a master's program or PhD program, but you cannot apply for UGRAD program. Hira Rafiq, 16 year वाले apply कर सकते हैं. Eligibility criteria में 14 and 15 year लिखा है. My degree is 5-year program. Now I'm in 8th semester. If your degree is of 5 years, and if you're in second last year, I think you can apply. But again, I'm just not sure if this is right, but I think there are some programs which are also not, if you are in one of those programs, you're not eligible to apply for this program. So please check on the USCFP website which are those programs. Does it require IELTS or English proficiency? So right now, no. Shakir का क्वेश्चन ये है कि IELTS की या किसी भी English proficiency certificate की जरूरत है? No. But when you get selected, then you apply for, or वो sponsored भी होता है, by the way. You apply for one of the English, I think it's TOEFL. You apply for TOEFL. वो सारा उसका arrange करते हैं, आपके test everything, and you just have to come and appear for the test. But during the time of application, no, you don't have to apply for anything. What if a person has no good English spoken? Will he be able to get selected? See, I'll tell you, English is not your first language. If you don't know how to speak good English, it's perfectly fine. It's perfectly fine. The only thing you need to do is, embrace yourself, who you are. Nobody expects an American to speak Urdu, right? So nobody expects a Pakistani to speak a very fluent English. It's perfectly fine, no problem.
You should just just be able to communicate what you want to communicate, and that's it. What is the official transcript for students applying for? What is the official transcript for a student applying for UGRAD program? I don't know what does that mean. If you're talking about transcripts, आपको university से मिलेंगी transcripts आपकी semester की. Mohammed Umar, just here to say hi, my friend. Okay, thank you. Hi, Umar, how are you? Sir, हम उनके culture के बारे में क्या लिखें? Sir, हम उनके culture के बारे में क्या लिखें? किसके culture के बारे में क्या लिखें? Sorry, I didn't get it. I'm a food science student, but I don't find my field there now. What could I select in education profession? I'm sorry, I cannot answer this question. You'll have to reach out to USCFP and ask them this question. Application से related कोई भी question है, there is a problem with the application, please call them. They will tell you what to do and what not to do. Hafsanur, is agriculturist can apply for a UGRAD program? I'm sure you can, yes. The documents need to be tested. I don't know, please go to the website USCFP and you will find the answers there. I think they need to be tested, yes. Sanya Khalid, I'm in my 6th semester of college, can I apply? Yes, you can apply. Ahmed Yasin, what we should attach with application as in place of certificate means which kind of certificate we should attach with application. Please, any questions, I'm asking again and again, please, any questions which are specifically related to documents, which are specifically related to, certificates, you can call them USCFP. They're very friendly staff. They will always help you with anything you need. Please call them and ask them all these questions. I'm in my 6th semester. Is this good decision to apply for this program? Absolutely, 110%. While writing your achievements, can you write those achieved during school? Absolutely. You can write any achievement that you achieved so far in your life. Shiraz Nadeem, sir, मैंने बहुत volunteer काम किए हैं, लेकिन मेरे पास सबके सर्टिफिकेट नहीं हैं, बहुत कम हैं, और यूनिवर्सिटी कैबिनेट में बहुत इवेंट करवाए, और मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ. क्या सब में ये सभी के लिए कितना इफेक्ट रहेगा? और भी कोई इफेक्टिव चीजें हैं तो बता दो. सभी के लिए सब कुछ बहुत इफेक्टिव है, सब कुछ मेंशन कीजिए, और इसको एक congested form में एक concise तरीके से मेंशन कीजिए. It should not be very cluttered, and it should not be expanded as well. 4th semester में हूँ और apply करना चाहिए, बिल्कुल apply करना चाहिए, apply करें. I mean, look, asking this question that if I should apply for this program is completely your choice. You should not let people decide for you whether or not you should decide to apply for a program. If you want to apply for a program, apply for it. If you don't want to apply for the program, don't apply for the program, no matter what I say. Iza Khan, sir, I have already answered this question. Mohammed Hassan Muzaffar. Okay, Hassan is my brother. What do you think which matters a lot in the program of selection? CGP and extracurricular or a good person statement? I think it's always a good person statement, which defines your overall personality. I think you joined late, but I mentioned in the start of the session that just the CGP or just the extracurricular activities, it doesn't matter. What matters is how you link your weaknesses, your strengths, with how much you're involved in the community and how you're contributing towards the community, or how you want to contribute towards the community. Okay, I'll just walk through the questions. If there's anything you want, I'll answer the questions. Okay, let's take audio question. If you want a question, please raise your hand. Okay, Shiraz Nadeem. Zara, can we ask Shiraz to ask his question? Yes, sir. Yes, Shiraz. Shiraz, sir, मेरा बेसिक ना ये पूछना था, GPA मैटर नहीं करती, आपने ये बोला. जी हाँ. तो सर मेरी बेसिकली ना SOP के लिए मैंने 3-4 अलमनाई से बात की है. तो SOP के लिए वो बेसिकली वो ये कहते हैं कि आपकी कम्युनिटी वर्क ज्यादा होना चाहिए. ठीक है. ओके. कम्युनिटी वर्क में सर ये आता है कि मैंने फैसलाबाद सिटी के अंदर एक वो शुरू किया था, क्या कहते हैं, प्लांटेशन का काम शुरू किया था. फिर मैंने कोविड के अंदर कम्युनिटी के साथ मिलकर गरीब लोगों को लिए खाना मुहैया किया. I'm losing your voice, Shiraz, but I think I have gotten your question. I think, Shiraz, before I answer your question, I want all of you guys to understand one thing. So, अगर आप 10 alumni के पास जाएंगे ना अपनी SOP लेके या अपनी application लेके, everyone will have a different perspective.
everyone will have different, because everyone has different experience, right? So the worst thing that you guys can do is कि आप बहुत सारे लोगों के पास जाएं और बहुत सारे लोगों से पूछें कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए. Number one. Number two, to answer your question, I heard till the part जहाँ पे आपने ये बताया कि उसमें कोई आपने green initiative लिया था. I think it is an amazing initiative, and you should mention this, you know, and relate to the fact that Pakistan, you know, is one of those countries जहाँ पे हमारा जो ecosystem is very disturbed. And for that, you know, you came up with this idea and you executed this task and you initiated, you led and successfully delivered this project. I think this is an amazing work, and you should definitely mention this in your SOP. Next question is Cheveria Zahid. Okay, what's your question? Assalamu alaikum. Ji walaikum assalam. I wanted to ask that if I'm selected for this program, UGRAD program, then is there any restriction that I can't apply for Fulbright after this program? Absolutely no. No. You can apply for all the programs. You can apply for, I know a lot of people who were part of Global UGRAD, and then they actually, if you honestly ask me, I think the chances of your selection to be selected for Fulbright program actually, you know, becomes higher, because they know you're a kind of person who was, you know, who has been to US before and who has contributed to, you know, your community and their community before. So I think your chances of getting selected for a Fulbright master's or PhD program even elevates further. So more chances. Next question, Osama Amjad. Please raise your hand if you want to ask a question. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने एक चीज पूछनी थी कि मेरे पास ना यूएस का जो पहले एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है तो क्या वो मुझे वो उसमें अपने एसओपी में मेंशन करना चाहिए, वो यूएस से का ही है? किस चीज का सर्टिफिकेट है वो? जी सामा किसका सर्टिफिकेट है? सर इंग्लिश एक्सेस माइक्रो स्कॉलरशिप प्रोग्राम यूएसए. बिल्कुल करें, अगर आपको लगता है कि it is, you know, it is something which is added to your personality and which is added to your overall experiences, then you should mention it. Absolutely, no problem. तो 2 ईयर का था वो, उसमें तकरीबन उन्होंने कल्चर के बारे में ही बताया, यानी कि 2 ईयर जो है एक्टिविटीज यूएसए के रिलेटेड ही करवाई हैं. बहुत ही अच्छी बात है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं, उसको लिंक करें इस चीज से कि नाउ यू नो इट दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम उसने मेरे इंटरेस्ट को बहुत बूस्ट किया कि नाउ आई वांट टू बी देयर, आई वांट टू गो देयर, यू नो, एक्सप्लोर ऑल दिस थिंग दैट आई हैव लर्नड, यू नो, थ्रू दिस प्रोग्राम. Let's take next question from, I think Jerry has done, Afifa Zahir. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जब हम अप्लाई करेंगे उसके बाद जो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हम अपनी मर्जी से कोई यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं या फिर वही हमारे लिए सिलेक्ट कर लेंगे कि हाँ भाई आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन है? नहीं, आपका इसमें कोई भी वो पार्टिसिपेशन नहीं होगी. दे विल प्लेस यू एंड वो मेरिट क्या होता है, वो क्या अंदर कैसे उसको प्लेसमेंट होती है, उसका किसी को भी नहीं पता other than program officers. So आपकी जो प्लेसमेंट होती है that is completely in the hands of USCFP. आपको उसमें कोई say नहीं होती है उसके अंदर. Okay, next question, Moiz Ahmed. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर हम अपनी एसओपीज को बाकी जितने भी स्टूडेंट्स एसओपी जमा करवाते हैं उनसे हम कैसे डिस्टिंक्ट कर सकते हैं? So so I will ask you one question, Moiz. Try to answer me this question. If I tell you, Moiz, आपकी personality को आप मेरी personality से किस तरह differ कर सकते हो? Can you answer this question? Yes, you can, right? You can tell me, for example, Yes. Hamza, मेरी personality traits ये हैं और आपकी personality traits ये हैं. मेरी personality के अंदर अच्छी बातें ये हैं और आपकी personality के अंदर बुरी बातें ये हैं. So there are a lot of reasons, you know, जहाँ पे हम आप और मैं एक दूसरे को डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, राइट? सर और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इतने पॉइंट्स को हम 250 वर्ड्स के अंदर किस तरह कंसाइज करेंगे? कंसाइज भी नहीं होता. जी कंसाइज की मैंने आपको शुरू में इसलिए स्पेसिफिकली इस पॉइंट पे बात की थी कि जब आप शुरू में एसओपी लिख रहे हो ना, उस टाइम कंसाइज करने का बिल्कुल भी मत सोचें. उस टाइम जो आपने वहां पे 4 पॉइंट्स मेंशन उनको कंप्लीटली आंसर करें इन द बेस्ट वे पॉसिबल. वो उस विदाउट केयरिंग, यू नो, अबाउट द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट यू हैव रिटन. व्हेन यू हैव रिटन ऑल दोस वर्ड्स, देन आप जब उसको सारों को 4 पैराग्राफ्स को या 4 आंसर्स को आप क्लब करेंगे,
तो उसको उन आस्क को जब आप बार-बार रीड करेंगे, दूसरों करेंगे, तो every time you will read it, you will find something, some information that would be irrelevant, that would be unnecessary information. So try to, eradicate this information, try to remove that information from your SOP, and eventually it will trickle down to 200 and 250 words. Next question, Shiza Rashid. Okay, one more thing. If you have already asked a question, please, try to give other people more space, ताकि बाकी लोग भी अपने questions पूछ सकें. So, जी, वालेकुम अस्सलाम. Sir, I have a question that can we choose a different field of study? For example, I'm from student. Can I change my field of study? No, I don't think so. No, you have to, at least you have to take 2 courses जो आपकी अपनी field of study के courses होते हैं. आपको minimum वो 2 course लाजमी लेने पड़ते हैं. Okay, and sir, there was section which says add courses you have done. Should we add What? our major field of Come study again? there or all subjects? Sir, Come again, there sorry. was section in application which there was section in the application which says add courses you have done. Yes. So should we add a major field of there or all the subjects we have studied in that field? All your subjects that you have taken in your university so far. All right. Okay. Next question is Khizr Ashraf. Sorry, it's Khizra. I'm sorry. Okay, it's okay. सर मैंने पढ़ा था कि एक वेल बैलेंस्ड एसओपी जो है वो नॉट ओनली हाईलाइट योर एकेडमिक स्ट्रेंथ बट टू प्रोजेक्ट योर नॉन एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट्स. इज इट राइट? I'm sorry, I couldn't catch. What did you say? Come again? Sorry. सर एक वेल बैलेंस्ड एसओपी में हमें अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज को हाईलाइट करना चाहिए या नॉन एकेडमिक अकम्प्लिशमेंट्स को? In your SOP, your question is, should you highlight your academic or non-academic activities? Is this your question? Yes, sir. It should be a combination of your academic, extracurricular, and your personality. So your 250 words or 200 words. अगर मैं एक SOP पढ़ूं, तो मुझे ये बताएं कि what Khizra has done in her past, say 20-21 years of her life. Does it make any sense? So it will include your academics, it will include your extracurriculars, it will also include your personality. That's it. Okay. All right. Next question, Saqib Mir. Okay. By the way, raise your hand. There is an option to raise hand in the meeting. Raise your hand if you want to, ask a question. Number 1. Number 2, Zara, let me know, how much time we have if you want to end this anytime soon. Yes, Saqib. It's totally dependent. Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum assalam. Sir, I am from Gilgit-Baltistan. So I have already registered myself UGRAD. मैंने already registration वहाँ पे की हुई है. वो वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के लोगों को प्रेफर किया जाएगा. तो सर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं सर कि मतलब देखो यार, पता है, my understanding साकिब of this sentence, I know for example कि वहाँ पे ये लिखा जरूर होता है, लेकिन होता ये कि आप what UGRAD program or what USCFP really wants is to have the cultural diversity in a cohort. For example, अगर वो पाकिस्तान से 100 लोगों को उठा के भेज रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि इन 100 रीजन्स 100 बच्चों के अंदर ना पाकिस्तान का हर रीजन, हर सूबा, हर सिटी वो रिफ्लेक्ट हो. वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सारे के सारे बच्चे आज़ाद कश्मीर या गिलगित से हों या बेसिकली कराची से हों या लाहौर से हों या इस्लामाबाद से हों. वो चाहेंगे बेसिकली कि इस 100 बच्चों के अंदर या 120 बच्चों के अंदर हमारे पास बहुत सारी सिटीज, बहुत सारे रीजन्स और बहुत सारे जो है ना बेसिकली पाकिस्तान से एक मेजर रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तान के कल्चर की, राइट? ताकि जब आप लोग, और इसकी एक रीजन ये भी है कि ताकि जब आप लोग वापस आओ तो आप उसका इम्पैक्ट इन डिफरेंट सिटीज वो ज्यादा हो. अब वापस आके फिर उसी जितनी ज्यादा सिटीज होंगी, जितने ज्यादा सूबे होंगे, उतनी ज्यादा बेसिकली उसके बारे में वो फर्दर बात होगी, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करोगे. सो इट्स वेरी डाइवर्स. मेरा एक सवाल ये था कि मतलब वहाँ पे जाके वो मतलब जो हमारे सेमेस्टर से मजीद फर्दर एक्सटेंड हो सकते हैं या 1 ईयर ही होगा सर? नहीं साकिब भाई, 1 ईयर भी नहीं है, आपका एक सेमेस्टर है जो कि आई थिंक 4 to 5 months का होता है. अगर हमारा और वहाँ पे एकेडमिक वो अच्छा रहेगा तो एक्सटेंड नहीं हो सकता?
एक्सटेंड नहीं हो सकता, एक्सटेंड नहीं होता किसी भी सूरत, आपको वापस आना पड़ता है सेमेस्टर के बाद। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महपरा। Hello, Assalamualaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I'm Mahpara from UAS Lahore, or I want to ask how to make a strong start in SOP. Like if we write SOP and then filter and refine it, then how can we know that it is a strong start and it will grab the attention of the supervisor or the recruiter to So Mahpara, read there is no more? Mahpara, there is no right answer to this question. Any start can be a great start until and unless it conveys a meaning. So मैंने सेशन की शुरू में बताया था कि for example your first opening statement of your SOP, I personally believe that should be a line, should be a very strong line and very easy line which conveys your personality, which conveys your overall personality as a human being. So there is no right or wrong answer to this question. You can literally start your SOP by saying my name is Mahapara, but that is not a good start, right? That is a very conventional start. So start by saying something which is very simple yet very powerful. And I think I can't think of anything other than your own personality. So think about the best personality trait that you have, and then start your SOP from that particular trait. Next question is Bakar Heather. Bakar Heather, next question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, वो आपसे मशवरा ये लेना था कि मैं अपनी एसओपी अगर स्टार्ट करूं तो पहला जैसे कि क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी के बारे में बताना है। तो उसमें सर मैं अपना बचपन से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा या मतलब अपने मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन भी मिडिल का भी बताऊंगा, ऐसे ही है? आई डोंट थिंक ऐसे है। इसकी रीजन ये है कि अगर बचपन से बताना शुरू करोगे तो अगर 250 वर्ड्स हैं, अगर 250 वर्ड्स के लिहाज से देखो आप ना तो आपके पास एक थोड़ा सा एक आइडिया दे पैराग्राफ दे के कि मैं लिए अपना स्टार्ट कर लूं। आपके पास नहीं, मैं आपको आइडिया दे नहीं सकता ना, मैंने आपको यही तो बताया। आपको देखो, आपके पास एक पैराग्राफ के लिए ना 60 वर्ड्स हैं। थिंक अबाउट इट दिस वे। सो from your childhood up until today, up until now, what is something that you have done which has made a difference, and that that particular thing is a part of your personality and your interest. Write those things down. ये चीज बताने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जांपल कि मैं जब प्राइमरी क्लास में था या जब मैं 8th क्लास में था तो मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, या इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैं जब 10th क्लास में था तो मैंने एक बच्चे को वो क्लास में फेल हो रहा था 3 साल से मुसलसल, पर मैंने उसको साथ बिठा के पढ़ा के उसको जो ना वो ग्रेड्स आगे लेके आया। दैट इज समथिंग मीनिंगफुल। एक बार याद रखें, द इम्पैक्ट इज नॉट ऑलवेज क्वांटिटेटिव, इट इज वेरी a lot of time it is qualitative as well. So अगर आप ये सोचना कि एक बंदे ने अपनी एसओपी में लिखा है कि मैंने अपने इस काम से 200 लोगों को इम्पैक्ट किया, yes it is good, बट अगर आपने किसी एक इंसान की जिंदगी के अंदर भी कोई मीनिंगफुल चेंज लाया ना, that is a very good point. So no need to write everything about your life. Write those things which you think have made a difference. Next question is okay sir, how much students are selected in Pakistan? यार आई थिंक एक बैच के अंदर आई थिंक देयर आर 110 स्टूडेंट्स जो कि सिलेक्ट होते हैं, और वो बेसिकली टोटल वो सिलेक्ट करते हैं आई थिंक 220 250, जिसमें कुछ प्रिंसिपल कैंडिडेट्स होते हैं, कुछ ऑल्टरनेट कैंडिडेट्स होते हैं, जो कि एक बैच आता है फॉल में, एक बैच आता है स्प्रिंग में आई थिंक। तो 220 250 स्टूडेंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेरा खान। Again, I'm sorry. Raise your hand if you want to ask a question, please. Okay, Sumaira, yes, please. Assalamualaikum, sir. I'm Sumaira Khan here from Karachi. I'm the student of BS1 in Zoology Department. Sir, currently I am working in NGO, but this NGO is not registered. So shall I mention in SOPs or not? In my personal SOPs?
I'm a strong believer of the fact that you don't need any certificate as a proof of evidence, or as a piece of evidence, because everybody can make a certificate. It's not something huge. Yeah. So from your personal statement, what you have done, try to convey it in a very meaningful way and in a very concrete, very strong way, and that is more than enough. Nobody in the interview will ever ask you कि आपने यहाँ पे ये चीज mention की कि आप इस NGO में काम करती हैं, मुझे इसका certificate ला के दें. कोई बंदा आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा. लेकिन yes, those people who are interviewing you, they are experienced enough to identify कि आपने सच लिखा है या झूठ लिखा है. So do not worry about certificates, or do not worry about if the organization is registered or not registered. If you are doing something good, if you're doing something impactful, then that's it. It's more than enough. So, okay. I am the student of BS1, so can that's the right time then I apply or BS2 and 3 and after 1 to 8? मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया. I'm sorry. I mean, this time I read first semester. So shall that time is right that I apply? Yes. If you're in third semester, yes, you can apply. If you're in third semester, yes, you can apply. First semester. First semester, no, you cannot apply. Okay. Thank you, sir. Yeah. Welcome. Next person, Sumaira Khan. Okay, I think she has dropped. Next question, Hamza Shakil. Hello, sir. Ji, hello. I am a student of food science, but my field is not mentioned in the scholarship fields. So what should I do? Call USCFP. Ask them, tell them about your field, and ask them if you can apply. Okay. I recently have mailed them, but don't receive any answer. It's long a week. Call करें उनको. email का wait ना करें. Call करें उनको. Okay. Any question as such? Again, I'm repeating this. Any question in regards to something is not in the application and you are facing any issues as such, call them directly. They're very helpful staff. They will tell you immediately what needs to be done. Next question, Abdullah. Okay, we'll take just 5 more questions. Okay, so then I think let's call it off. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूडी टेक्सला में स्टूडेंट हूँ. तो मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता था कि अगर हम फर्स्ट टाइम रिजेक्ट हो जाते हैं तो सेकंड टाइम भी हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम लास्ट यानी कि हम सेकंड सेमेस्टर. Yes, you can. Yes, you can. Okay, sir. Thank you. Welcome. Next question, Fariha Noor. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. सर मैंने ये पूछना था कि आई एम करंटली इन सेकंड सेमेस्टर और हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो आउट नहीं हुआ है, तो उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में क्या लिखना है? I don't think you can apply if you're in the second semester right now. Oh. Yes, I'm sorry. But I think it's a good start. Keep an eye out. So apply next year. Okay, sir. But I don't think you can apply this year. Okay, sir. Thank you, sir. I think that's it. No more questions? Okay, there is one more. Afifa Zahid. Aruj Fatma. Okay. Afifa or Aruj, whoever wants to go first. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम अपनी मर्जी से यूनिवर्सिटी को चेंज करने का ऑप्शन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आप यूनिवर्सिटी को चेंज नहीं कर सकते. The placement, it is done by the USCFP and that's the final placement. आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि मैंने किसी और यूनिवर्सिटी में जाना है. It is not possible. Thank you, sir. Welcome. Danish Mohammed. Okay, one last question इसके बाद. Danish के बाद one last question, okay? And then we are done. अस्सलाम वालेकुम सर. How are you? जी वालेकुम अस्सलाम. अच्छा सर, मैंने उसके बारे में थोड़ा पूछना था क्योंकि मैं जीजी खान बेशक मेरा एरिया है, तो इसलिए यहाँ कोई एनजीओ वगैरह इस तरह के कुछ काम नहीं करते जिसके लिए मेरे पास सर्टिफिकेट हो.
तो इसके लिए मैंने अपने क्वालिफिकेशन के साथ सिर्फ एकेडमिक है और दूसरी इस टाइप की कुछ नहीं है, तो इसके साथ मुझे क्या करना चाहिए? आपको ये चीज़ मेंशन करनी चाहिए अपने एसओपी के अंदर कि डीजी खान के अंदर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, लेकिन मेरा हमेशा से दिल करता था कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे लोगों को मेरे से फ़ायदा हो, मैं सोसाइटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकूं। आई थिंक दिस प्रोग्राम विल हेल्प मी टू अचीव दैट गोल। मेक सेंस? सर, थैंक यू। वेलकम। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लेट्स गो विद डॉक्टर जमीन हुसैन भट्टी। Dr. Zameen, your microphone is muted. Can you unmute it, please? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ सर, I am a student of final year sir. Firam second sir. I can't hear you properly. I'm sorry. हेलो सर, आवाज आ रही Now है? I can. जी आवाज आ रही है। हेलो हेलो। I can hear you. Can you hear me? Yes sir. All right. Okay. Sir, What's I your am a question? student of last year of DVM sir. All right. Let's take next question. I don't think I can hear Dr. Zameen. I think I have taken question from Shiraz. I think I've taken. I think Azam bhai, I think that's it. हमजा भाई, क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, आप पूछिए क्वेश्चन बिल्कुल। हमजा भाई, मुझे सिर्फ ये आपने बहुत अच्छे जो है ना मेरे ख्याल में कम्प्रीहेंसिव आंसर्स दिए हैं, खुद भी बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर दिया प्रोग्राम को। तो अगर मेरे ख्याल में ऑडियंस कोशिश करें, जो कि हमजा ने बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि बर्क रफ्तारी से आंसर दिए क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हो। मुझे आपका लास्ट आंसर बहुत पसंद आया, स्पेशली जो दानिश ने डीजी खान से पूछा ना कि अगर उनके पास वॉलंटियर ऑप्शंस नहीं है, तो अगर वो ये भी लिख देंगे ना कि किस तरह ये प्रोग्राम उनको हेल्प कर सकता है फ्यूचर में, कि वो वापस आके वहाँ पे वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर दें, तो यकीन करें कि यूएससीएफपी जो है या यूएस मिशन टू पाकिस्तान जो है, वो यही चाह रहे होते हैं कि ऐसे लोगों को हम सेलेक्ट करें जो कि वापस आके एक एग्जाम्पल सेट करें। तो आप ऐसे ना सोचा करें कि अगर आपके पास चीज़ें नहीं हैं, तो वो आपके लिए नेगेटिव है, बल्कि वो आपके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। तो थैंक यू Of हमजा, course. अच्छा आंसर था। हमजा, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि चूँकि आप यहाँ पे मिशिगन में रहे हो, यूएस में ट्रैवल भी किया है, तो थोड़ा-सा मतलब लेट्स वॉक अस थ्रू, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम था, उसने आपको किस तरह एम्पावर किया है? यानी कि जस्ट फॉरगेट कि आपके पास पहले क्या क्रेडेंशियल्स थे, यूएस के एक्सपीरियंस ने आपको कितना ज़्यादा एम्पावर किया है कि आप फ्यूचर गोल्स जो है उनको परस्यू कर सकें? आप 2-3 चीज़ों में ब्रेक डाउन कर सकते हैं जो कि आपके बड़े आपको बेनिफिट्स नज़र आए एक्सपोज़र के थ्रू या जिस मैं ना आपको बड़े आसान, जैसे वो मूवी में कहते हैं ना, आसान भाषा में इन बच्चों के लिए मैं ये चीज़ बड़े आसान उर्दू में ये चीज़ आप लोगों को बात बताना चाहता हूँ कि मैं जब इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुआ था और मैं जब प्रोग्राम पे गया था ना, I was a very different person back then, and when I came back, I was a completely different person. And I'm not saying that, you know, in a bad way, in a very good way. And how? For example, जब मैं प्रोग्राम के लिए गया था, तो I was one of those. So since there are a lot of engineers in my family, और मेरी सोच वो थी कि यार बस मैंने, because I also am a graduate mechanical engineer, so मेरी वो सोच थी कि यार बस मैं यूनिवर्सिटी से फारिग होऊंगा, किसी मामू को फोन करेंगे और जो है ना बेसिकली कहीं पे जॉब लग जाएगी। मेरी वो वाली सोच थी, जो बेसिकली डिपेंडेंट सोच होती है कि मैं किसी से क्या कि मेरी जॉब लग जाएगी। And when I came back, I was a completely different person in the sense कि यार मैं सोचा कि यार ये तो मैंने करना ही नहीं है, ना मैंने किसी को फोन करना है और ना मैंने अपने इसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आगे परस्यू करना है। Now, you know, a lot of people, you know, I'm sure कि आप सब एक दिन इंशाल्लाह ग्रेजुएट होंगे, and I get this question a lot कि यार मेरा भी बहुत दिल करता है मैनेजमेंट में जॉब करने का, लेकिन कैसे करनी चाहिए? So, you know, आपका जैसे मैंने इस वेबिनार से मैंने स्टार्ट में एक चीज बोली कि यार अगर आप लोग ये क्वेश्चन आके यहाँ पूछोगे ना कि मेरे पास फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या फॉर एग्जांपल यूईटी टेक्सला में जो है ना
अगर मुझे ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो मैं कैसे निकालूं, या फॉर एग्जांपल मेरे यूएससीपी की एप्लीकेशन में ना ये मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो बटन पे क्लिक नहीं हो रहा, या मुझे एसओपी में क्या लिखना चाहिए। इसका मतलब है कि आप इस प्रोग्राम के आपका ना आपकी एक्साइटमेंट लेवल या आप इस प्रोग्राम में उतना इंटरेस्टेड हो ही नहीं जितना आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। So through this program I was able to figure out what I want to do when I get out of the university. Through this program I made those friends which helped me professionally. I made those connections जिन्होंने मुझे बताया कि for example if you want to do this, what are the baby steps that you have to take in order to reach this goal of yours. So your network, at the end of the day, it's very important. Nothing is more important in your life than your network, the people you go around with, you sit with, you talk to. So this program, number one, this expanded my network. This changed the way I used to think, and ultimately helped me land a career where I always wanted to see myself. So and the last but not the least, again, I think we should not just focus on the professional part or the serious part. It's a lot of enjoyment. आपको मुफ्त में आपको पैसे मिलते हैं एंजॉय करने के लिए, तो यार और क्या चाहिए। तो पार्टी भी है और a lot of learning as well. थैंक यू हमजा, बहुत अच्छा आंसर था। तो आज का हम ये सेशन जो है वो कंक्लूड करते हैं, और लास्ट में मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर आप लोग भी परस्यू करना चाहते हैं, जैसे हमजा ने मतलब डेफिनेटली विन किया और उसके बाद आज भी बड़ा एक अच्छा सक्सेसफुल करियर जो परस्यू कर रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ना देखा करें कि ये कोई वन नाइट शिफ्ट थी या वन नाइट टास्क गोल था। इसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो जो आज के हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बड़े नाइव से थे, हमजा ने शायद उनको थोड़ा सा ट्रीट इसलिए किया है कि अगर आप वाकई ही परस्यू करना चाहते हैं तो शो योर एंथुसियाज्म कि आप वाकई ही एक डेडिकेटेड पर्सन है। तो आज का ये जो सेशन है ये बेसिकली आपको इंस्पायर करने का था कि अगर आप देखो वाकई ही परस्यू करना चाहते हो तो फिर आज से अपने आप को बेस्ट कैंडिडेट बनाने के लिए तैयारी करना शुरू कर दो। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, Absolutely. सेकंड में हैं, तो अभी से आप वर्कआउट करो। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आप खत्म करो और उस स्टेज पे आओ जहाँ पे आप अपने आप को चैलेंज कर सको कि मेरी एसओपी में कौन-सी ऐसी कमी है जो मैं अभी भी पूरी कर सकता हूँ। तो वो आप ओवर द टाइम जो है ना उसको कंसीडर करना, उसको कंपनसेट करना शुरू कर दें। तो हम हमेशा से एनकरेज करते हैं खैरकुन के प्लेटफ़ॉर्म से कि ये कोई वन नाइट स्टडी वाला जो सिस्टम है ये वो नहीं होता। आप जब भी कोई ज़िंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखें ना, कितनी आबादी है हमज़ा? मेरे ख्याल में 20 कितनी है, 220 मिलियन तो होगी पाकिस्तान की। और Absolutely, yes. 220 मिलियन में से 220 कैंडिडेट जाने हैं यूएस में। तो इसका मतलब है आउट ऑफ 1 मिलियन ओनली 1 पर्सन विल बी सिलेक्टेड। अब मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे होते हैं वहाँ पे, 50% तो यूथ है ना। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है जो आपने उसको ओवरकम करना, और फिर आपने और आप यूएससीएफपी में आपको बता दूँ बहुत अपॉर्च्युनिटी देता है। ऐसे लोगों को वो कल्चरल डाइवर्सिटी देखते हैं, इक्विटी देखते हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो कि अपना जिनके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं होती लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में। तो प्लीज़ आज का जो हमारा सेशन है, जो हमज़ा ने जितनी भी एडवाइस दी है आपको, जितनी भी सजेशंस दी हैं, आप उनको सीरियसली लो, मेहनत करो, आप खुद भी करो, दूसरों को भी एनकरेज करो कि किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी में एक डिफरेंस ला सकें। हमज़ा और एक आज़म भाई इसमें एक चीज छोटी सी ऐड कर लूं, आई एम सॉरी कि यार इस कॉल, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू आज़म भाई, इन दिस वेरी कॉल my younger brother is also in this call right now, but whenever he comes to me with naive questions, like for example कि यार ये क्वेश्चन का मैं आंसर कैसे करूं, तो मैं उससे कहता हूं जाके गूगल करो, जाके खुद देखो कैसे करते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों का अपना इंटरेस्ट, वही वाली बात है, अगर आप लोगों का अपना इंटरेस्ट नहीं है इतना कि आप लोग थोड़ी सी रिसर्च ये कर लें कि यार एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है और क्वेश्चंस को आंसर कैसे करना है, then you are not passionate enough to apply for this program. And I hate to say this, but I think you don't deserve to be selected for this program then, because ultimately you're not just representing yourself, your university, your parents, your family, but you're representing Pakistan. So you have to be passionate enough, you have to be motivated enough to actually spend some time, give your time to this thing. And if you get selected for this program, it will be amazing. It will be amazing. So good luck with your applications and spend time on it, and be as honest while writing your SOP as you can. Do not copy other people. Do not copy other people's personalities on your paper. हमज़ा इसमें बहुत अच्छी बात है ये बाकी कि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकते ना एप्लीकेशन के लिए, तो समझिए आप स्कॉलरशिप से जो एक चीज़ बंदा
अचीव करना चाह रहा था वो भी उसके गोल्स नहीं पूरे होते, ऑब्जेक्टिव्स नहीं पूरे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आई वुड से ऐसे ही है। आल्सो वन लास्ट थिंग कि अगर आप ऑनेस्टली थोड़ा-सा मैं हमेशा से कहता हूँ कि जब आप स्कॉलरशिप विनर बनना चाहते हैं ना, तो आप इस तरह ना देखा करो कि कितनी एप्लीकेशन साल में फ़िल की हैं। आप इस तरह देखा करो कि आप कितने लेवल के क्वालिटी के कैंडिडेट बन चुके हो इस वक़्त। उसका ये होता है कि ये बिल्कुल छोटे-छोटे ऐसे ही बेबी है। स्टेप्स होते हैं, जैसे हमज़ा ने बोला कि इनको आप अगर करियर में मतलब ओवरकम करते हो ना, तो इससे होता क्या है कि आप दिन-ब-दिन जो है ना, वो बेहतर बनते जा रहे हैं। तो ये जो यूग्रेड का प्रोग्राम है, इसकी एप्लीकेशन में वो 4 जो क्वेश्चंस है ना, लिटरली इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एनी एक्सटर्नल लाइक जो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप होता है, इवन विद इन यूएस जो लोकल डोमेस्टिक स्कॉलरशिप होते हैं, वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो हमेशा एप्लीकेशन का पार्ट रहते हैं। अगर वो नहीं भी बिल्कुल ऐसे लिखते ही है। हैं, तो आप अपनी एप्लीकेशन में उनको इंसर्ट करें, तो इतना अच्छा एक इंप्रेशन डालते हैं कैंडिडेट का रीडर और रिव्यूअर के ऊपर कि वो वाक़ई कहता है कि यार इसको वो सेंस है जो हम चाह रहे थे कि अपने मतलब इंटरनली बिटवीन द लाइन्स जो है ना, ये मेंशन करे मैसेज और ये इसने किया है। तो आपको ये जो सारी प्रिपरेशन हो रही है, ये यूग्रेड की हो, फ्यूचर में फुलब्राइट के लिए करेगी, एरिस्मस के लिए करेगी, बाकी ऐसे ऑस्ट्रेलिया अवार्ड है, बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स हैं जो आप इन्हीं छोटी-छोटी जो प्रिपरेशंस के ऊपर विन कर सकते हैं। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप सीरियसली इन तमाम जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमज़ा ने हमें स्पेशली जो मेंशन किए हैं, वो आप उसको कंसीडर करो, मेहनत करो और इंशाल्लाह आप विन करोगे। हमज़ा इसके साथ अगर कोई लास्ट मिनट एडवाइस है तो अदरवाइज़ हम इसको कंक्लूड बस my last minute advice is be yourself and work hard and inshallah you will be there. थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर खैर-कुन ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से, मेरी तरफ से हमज़ा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने Of दुबई से course, this was a ज्वाइन pleasure. किया और टाइम ज़ोन डिफरेंस था और फिर भी आपने टाइम डेडिकेट किया। थैंक यू सो मच। Thank you आपका very भी much for having me. Thank you. Thank you इसके guys. अलावा Thank you everyone and good luck everyone. Thank you. Bye bye. Take care. थैंक यू सो मच। थैंक यू ज़ारा फॉर मॉडरेटिंग द सेशन और तमाम हमारे जो ऑडियंस है उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज हमें जॉइन किया और हम दुआ करते हैं कि आप इसमें कामयाब हो। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, आप खैर-कुन के पेज के ऊपर हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट के ऊपर जाके विज़िट करें, जहाँ भी आप देखें, आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पोस्ट करने का और हम कोशिश करते हैं हम आपको रिप्लाई करें। आप ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वन्स अगेन ऑल ऑफ यू and have a wonderful rest of the weekend. Thank you. Bye. Bye. Take care.